हाँ, मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इफ यू वांट आप लीव कर सकते हो, आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप वहां से वो वीडियो देख लो तब तक, अगर आपको रिवीजन करना है, एंड आपका प्रॉपर क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है अपेक्षा, मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दे रही हूँ ग्रुप में। अटेंडेंस आपका लग चुका है अपेक्षा। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? इज एवरीवन इज सॉल्विंग द क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके। यस धर्मेंद्र, अटेंडेंस लग जाएगी बेटा, बिकॉज आई नो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। यदि स्कूल्स में पढ़ा है तो आप रह सकते हैं क्लास में, अनलेस आप रिवीजन कर लो अपना। अटेंडेंस लग जाएगा, डोंट वरी। ओके मैम, पर ये मैम पढ़ रखे हैं। पढ़ रखे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो फिर, कहीं पे भी डिफिकल्ट है, आई एम हियर टू सॉल्व। यू हैव 5 मिनट्स ओनली। जानवी, इट्स योर चॉइस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इफ यू वांट कि आपको ये चैप्टर आता है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप अपना नेम एंड रजिस्टर्ड नंबर चैट सेक्शन में शेयर कर दो, आपका अटेंडेंस पास हो जाएगा। आई होप सबके क्वेश्चन हो गए होंगे। सो कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग? अभी तक सिर्फ आई हैव 11 वोट्स। रेस्ट बच्चे जल्दी से करो। ओके रेहाना। वेरी गुड अनुष्का। Done, ma'am. ओके मिशबा, रेस्ट। सिर्फ 11 बच्चों का वोट आ रहा है अभी। डन गायत्री? I'm done, ma'am. ओके। 14 student. Okay, now time is over. Tell me the correct answer of question number 32. Light reaction or photochemical phase includes Option D, all of the above. all of the above, because light reaction involves light absorption and there is water splitting. Water splitting कौन सा ion कराता है? Splitting of water is carried out in the presence of which ion? Ion, metal ion. मैम मैंने भी Stop. एक भी पोल नहीं किया है। आई थिंक Tell me the name of ion जो water splitting कराता है। Water splitting, H2O, 2H positive.
plus half O2 ये क्या हो plus गया? 2 electrons. Ma'am, copper blue color protein. नहीं, just मैग्नीज, भूल गए? मैग्नीज, Mn. Manganese, it is responsible for the photolysis of water, or we can say splitting of water. And यही पे तो oxygen release हो रहा है. Yes, ma'am. And in the light reaction, ATP and NADPH both form. That's why the correct answer is all of the above. Question number 33. Light harvesting complexes are Hundreds of pigment molecules bound to proteins. exactly 100 of Option D. pigment molecules when bound to protein. Then why not A also? Ma'am, option D. Yeah. Ma'am, option D. No, I. आस्तिक सॉल्व केयरफुली. Yes, ma'am. अच्छे से सॉल्व करो बेटा, तुक्का नहीं लगाना है. मैम तुक्का नहीं लगाए थे, उस दिन लगा दिए थे, आज थोड़ी ना लगा रहे. 34. Photosystems are made up of which of the following center? Photosystem. Option C. Reaction center. Reaction Reaction center center and H2O. antenna and antenna. Not H2O. H2O नहीं होता है photosystem में. There is no H2O. There is a reaction center and antenna. What are antenna here? All the accessory pigments which are covering the main element. So the correct is C. Clear, Mishwa? Yes, ma'am. Question number 35. PS1 is located on the Option D. Non-appressed part of grana thylakoid. Option D, ma'am. Option B. Option D. D. Very good. Option A. PS1 is located on the non-appressed and appressed. Both regions में present होता है. That's why PS1 system found in both cycle as well as cyclic and non-cyclic. दोनों systems में पाया जाता है ये आपका. Remember, in non-cyclic photophosphorylation, we use PS2 and PS1 both. And in cyclic, which is carrying out where? Stromal thylakoid, stromal lamella. We use PS1 only. So it means PS1 is found in appressed region as well as non-appressed region. Appressed, समझते हैं ना, appressed, छिपा हुआ part, which is not in the direct contact of stroma. And non-appressed open part, which is in direct contact with the stroma. I think you are confused. ये देखो, ये क्या है हमारे पास? This is a single thylakoid. Yes, ma'am. तो single thylakoid में I am just highlighting the red one portion. The red one portion is appressed or non-appressed? It's non-appressed. Non-appressed part. ठीक है? And this yellow one part is Appressed. Appressed. part. So PS1 is located on PS non-appressed region as well as appressed region. दोनों में ये पाया जाता है. And two granas are connected with stromal lamella, or we can say stromal thylakoid. So PS1 also found on stromal lamella, on non-appressed, and this is your non-appressed region, and this is also your appressed region. I cannot understand this all. Rehana, try to understand, beta. PS1. Acha, tell me the photocenters of non-cyclic photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation, we have how many PS? We have two, na? The cycle start Yes, with ma'am. PS2. Cycle PS2 से start होता है. And in the cyclic photophosphorylation, what is the main PS1. center? PS1. So PS1 and हमारा जो नॉन साइक्लिक वाला है वो किधर चल रहा है? Where it is going on? Cyclic. Location of non cyclic one. Location. What is the location of non cyclic photophosphorylation?
नॉन साइक्लिक का लोकेशन क्या है? बताओ बताओ बताओ। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बच्चों। Non-cyclic photophosphorylation is carrying out in thylakoid membrane and cyclic photophosphorylation is carrying out where? Stromal, Stromal thylakoid. or we can say stromal thylakoid. तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में वी हैव टू रीजन्स। कौन कौन सा रीजन? आपका एक ये नॉन अप्रेस्ड वाला रीजन एंड द अप्रेस्ड वाला रीजन। यहाँ पे नॉन साइक्लिक चल रहा है, इधर हमारा साइक्लिक चल रहा है एंड नॉन साइक्लिक हमारा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में चल रहा है एंड हियर वी आर यूजिंग PS1 एंड PS2 बोथ। तो इट मीन्स हमारा ये थाइलाकोइड के अंदर भी हमारा PS1 है एज वेल एज इट इज फाउंड इन स्ट्रोमल लेमेला। तो नॉन अप्रेस्ड अप्रेस्ड दोनों जगह पे हुआ या नहीं? जेनिफर, Yes, ma'am. रिहाना, समझ में आ गया है आपको? आपका Yes, वॉइस? ma'am. यस, ओके, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ओनली। एंड द फॉर 36 क्वेश्चन, Option जी C, 700 nanometer. जी मैम। फॉर PS1 it is 700 700 nanometer and for PS2 is 680 nanometer. 680 nanometer. So the correct answer is C. Namrata, why are you saying B, beta? For PS1 it is 700, for PS2 it is 680. कॉन्सेप्ट ही अब में जा रहा है। रिहाना, डोंट वरी, आपको अगर नहीं अभी समझ में आ रहा है आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर रिकॉर्डिंग से नहीं आता यू कैन कॉल मी, ठीक है? ओके देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी विल सॉल्व, नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से नहीं, हम लोग डार्क रिएक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद है ना सबको डार्क रिएक्शंस? C3 C4, व्हाई वी आर कॉलिंग इट C3 साइकिल, व्हाई वी आर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, हमने पढ़ा था। अब अभी आई वांट एवरीवन आंसर इन द चैट सेक्शन बिकॉज आई कैन नॉट सी कि कितने बच्चे कौन कौन आंसर कर रहे हैं कौन नहीं। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 76 and 77 and randomly I'll pick a student जिसको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा। 76 and 77, you have 2 minutes only. वेरी गुड धर्मेंद्र। हाँ धर्मेंद्र, आपने नाम बताया था ना मेरे को लास्ट क्लास में आपका? रानी मैम। हाँ रानिया, सॉरी आई फॉरगॉट। Vishak, 76C and 77D. I can see there are some students who are little more confused.
Okay. Tell me the correct answer of question number 76. Option C. Option C. Why the correct answer should be option C? Can anyone explain? First stable product is carbon 3 compound. Yeah, why Kelvin cycle is called C3? Because its first stable product is C3 compound. And the name of that C3 compound is? Name. Tell me the name. Glycerin aldehyde 3-phosphate. No. Carbon. करेक्ट आंसर कौन बताएगा? कार्बन 3-phosphate. Triose phosphate. Phosphoglyceric acid. PGA. Phosphoglycerate. PGA. आयत रिवीजन नहीं किया किसी ने भी. So the why Calvin cycle is called C3 because its first stable product is 3-PGA phosphoglycerate या फिर phosphoglyceric acid which is a C3 compound. The correct answer should be C. And for question number 77 it should be Shikha, you are saying option D. Shikha समझ आया? Why correct answer should be C? Yes, ma'am. Okay. $77. A. चलो देख लेते Option हैं. Stroma enzymatic reactions incorporate CO2 into the plant and leading to ATP and क्या स्ट्रोमा के अंदर ATP and NADH2 का फॉर्मेशन होता है? Is it responsible for the formation of ATP and NADH2? No, ma'am. No, it actually uses ATP and NADH2. It never synthesizes ATP and NADH2. Then why are you saying option A? and I am confused. नो बेटा यू शुड बी कंफ्यूज बट आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. आपने रिवीजन नहीं किया ना किसी ने भी. Ma'am, option B. ऑप्शन भी देख लेते हैं चलो. एंजाइमेटिक रिएक्शंस इनकॉर्पोरेट CO2 in the plant leading to the synthesis of which in turn form exactly the correct answer should be B. Because ये यूज करता है ATP and NADH2 को and it give a starch or we can say it helps in the formation of sugar. शुगर का फॉर्मेशन ही हमको करके देता है. क्लियर? चलो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 78. Ma'am, option B. Option B. Everyone, Option B. carboxylation C3 cycle is catalyzed by which is option. No, ma'am. Option C. Option B. And if I say option D, then Yes, it is D. Yes. Yes, ma'am, it is D. why it is D? Mm, Ma'am, because in city plant, is carbon. Because this reaction is catalyzed by RUBP carboxylate and And it results in carboxylation step is catalyzed by carboxylase enzyme. They are not asking for name of enzyme. They are asking carboxylation कौन कराता है. So carboxylation is carried out by RUBP carboxylase. Done?
Question number Yes, ma'am. every CO2 molecule entering the Kelvin cycle needs, अभी आ गया हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, जिसको लास्ट ट्रिक याद होगी वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा. हरी अप. Yes, Jennifer. Ma'am, option A. Yes, ma'am. Option A. ऑप्शन ए. याद है ना हमको वो ट्रिक 3 2 1. Yes, ma'am. 3 2 1. 1 for CO2, 2 for NADPH and 3 for ATP. ATP. Very good. So the correct answer is Option A. question number 80. In dark reaction, regeneration of RUBP needs regeneration of RUBP. It needs how many ATP? Ma'am, option B. Yeah, option B. It needs 1 ATP for the regeneration of RUBP. So the correct is option number B. अब मेरे को आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ. अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया इट मींस आपको पूरा साइकिल प्रॉपर्ली याद है. क्वेश्चन नंबर 83. मैम सी. सबका आंसर चाहिए मेरे को. Ma'am, Ma'am, option number C. Everyone is saying Ma'am, C. option C. ये देख लेते हैं. So the first step is your addition of CO2. So it should be carboxylation. In this way, the option should be C or D में से एक होना चाहिए. After carboxylation, second step we have reduction. And third we have regeneration of RUBP again. So the correct is option C. Very good. यहाँ पे देख रहे हैं ना, we are seeing कि there is utilization of 1 ATP for the regeneration of RUBP again. चलो, इससे हमारा हो गया. अभी वी कैन सी द नेक्स्ट वन. वी हैव दिस वन साइकिल. अभी सबसे पहले इस साइकिल का मेरे को नाम बताओ. टेल मी द करेक्ट नेम ऑफ दिस वन साइकिल. Hatch and select pathway. C4 pathway. C4 pathway. एग्जैक्टली, C4 पाथवे. किसी ने भी हैक एंड स्लैक वाला बोला. Yes, ma'am. क्या वो सही बोला उन्होंने? जानवी. मैम सिलेक्ट पाथवे. Exactly, this was correct. So cycle सबने देख लिया. Have you all seen the cycle correctly? Then I need your answers in the form of chat section में. I need your answer कि A क्या होना चाहिए, what should be your B, C क्या होना चाहिए, D क्या होना चाहिए, without seeing the options. A is mesophyll cell. Okay. B is fixation. Ma'am, C is सी मैम बंडल सीड सेल. and D is decarboxylation. Carbon.
चलो, let's see. What are you saying for A? Mesophyll cell. Very good. Mesophyll cells. And C वाला सेल क्या है? बंडल Bundle सीड sheath सेल। cell. cell. Very good. These are bundle sheath cells. What should be B? Fixation. 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 This is Fixation. fixation. Very good. And D? Decarboxylation. 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 Very good. चलो यही था। तो कैन वी मैच आवर आंसर्स? ए आप लोगों ने बताया ए शुड बी और मीजोफिल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ए एंड बी शुड बी करेक्ट। सी आपने बताया बंडल शीट सेल्स, वेरी गुड। बी आपका फिक्सेशन, या बी फिक्सेशन। सो द करेक्ट इज ए ना? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। वेरी गुड। बच्चों इन द चैट सेक्शन आई हैव शेयर्ड अ गूगल फॉर्म, आप लोग वहां पे अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो प्लीज। Okay, ma'am. Okay. Mark your attendance, then I'll give you one more question. Yeah. One question. After marking your attendance, try to solve these questions. This one. What should be your A? What should be your B? What should be your C? A, C, B. And here's your D. Okay. Can you please send the attendance form again, sure, Sanjay? A, photo system, B, cytochrome C, and C. Okay, that means मैम लीव कर सकते हैं? no, beta. Solve this question first. पहले question solve करो.
Ma'am, A is photosystem. Yeah, it can be. हमें same diagram. We have seen the same diagram in NCERT. Ma'am, A is photosystem 1, B is photosystem Photosystem 2. 2 because non-cyclic photophosphorylation start with PS2 है ना, and then this is your cytochrome या फिर plastocyanin. Connection between PS1 and PS2. Connection between PS1 and PS2. Let's see the options. A should be PS2. ठीक है? In this way, we have two options. And B can be your, B is your PS1. In this way, we have again, and the option C, they are saying it can be cytochrome, I told you. So this is your cytochrome B6F, not only BC. And D is your, inside the thylakoid membrane, we have lumen. Very good. So the correct is your lumen. It's not stroma. So correct is your D. agree everyone. Why the correct answer should be D? Yes, चलो, ma'am. इट मीन्स हमको कॉन्सेप्ट्स तो काफी अच्छे से आ गए हैं इस चैप्टर के. सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 54. Ma'am, option B. Which one? Option B. Option B, ma'am. Let others also try. Option B. बस मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ये सब क्या पढ़ा है. रिहाना, आप हिंदी मीडियम बैच से हो ना, आई गेस. रिहाना, Ma'am, हाँ, option B. तभी आपको समझ नहीं आया. बेटा डोंट वरी, आपके बैच में अभी ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है. तो वंस वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, आपको समझ आने लगेगा. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले वी नो 700 किसके लिए होता है? 700 इज फॉर योर PS1. PS. ठीक है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये सी क्या होना चाहिए? सी शुड बी PS1. तो इसमें वी हैव कैंसल्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. ठीक है. लाइट एंटर हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन हमारे पास ये व्हाट शुड बी योर ए? ए क्या होना चाहिए? ETS. Electron transport system. Electron transport system. Very good. And B is your ADP plus inorganic phosphate milke, they will form ATP. So the correct is your B. Agree? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ रेहाना, डोंट वरी, आपके में अभी वाला बैच नहीं स्टार्ट हुआ है, चैप्टर सॉरी. अभी एक क्वेश्चन हम एक्सपेरिमेंट से करना है. हाँ, दिस वन क्वेश्चन, दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इट मीन्स हमारा लास्ट जितना हमने चैप्टर्स में टॉपिक्स पढ़े हैं उनको सारे टॉपिक्स अच्छे से रिकैप हो गए. यस जानवी? Ma'am, A is PS2, photosystem 2, and B is PS1, ओके. and C is NADP plus, and D is NADPH. Ma'am, option B. लेट अदर्स ऑल्सो ट्राई. Option B, ma'am.
Option A is photosystem 2. Option B is photosystem 1. Okay. And option C Option C is NADP plus. And plus. option D is NADPH. So in this way, the correct answer is Option Option B. Very good. Very good. And this cycle is known as Z cyclic phosphorylation. Z scheme and Z scheme and non-cyclic Phosphorylation. photophosphorylation. What is the location of this one site? thylakoid Thylakoid membrane. Thylakoid membrane. Membrane. And what is the location of cyclic photophosphorylation? Stromal thylakoid. Very good. Stromal thylakoid. What is the first stable product of C3 cycle? 3-PGA. Very good. 3PGA. And the first CO2 acceptor? CO2 acceptor is carboxylation. RUBP. RUBP carboxylase. RUBP. C4 के लिए first stable product? OAA. OAA. C4 के लिए. And first CO2 acceptor? First CO2 acceptor is F. Oxalate. Phosphoenol Pyruvate. pyruvate. And enzyme used is case. And here enzyme used is rubestone. Does C4 plants ever show photo respiration? No. No photo respiration. C4 plants can tolerate dry, trophic condition. They can tolerate high temperature, high light intensity. And why they can tolerate these conditions? Because they have a cranch anatomy. Remember cranch anatomy? Yes, ma'am. Cranch anatomy. So ये बहुत important chapter है बच्चों. NEET point of view से this is literally very important. And जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया उससे बाहर आपका NEET में कोई question नहीं जाएगा. बट आप लोगों को नोट्स एज वेल एज अपना एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है. एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है. एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको बहुत सही से आपको करना है. ठीक है? Yes, ma'am. ओके देन. सो दिस इज फॉर टुडेज. आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. आई शेयर दिस PDF with all of you in the group also. तो रेस्ट जितने क्वेश्चंस बचे हैं आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देख सकते हैं. एज वेल एज ये PDF आपका आपके जो लिंक है ना जिसमें आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं वहां पे भी अटैच है. आप वहां से भी कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स आपने सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया. हैव यू ऑल मार्क योर अटेंडेंस इन द गूगल फॉर्म? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there anyone जिसने नहीं attendance mark किया? You will know the importance of attendance, why it is very important to mark your